Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with daily analysis of Nifty, Banknifty and Sensex. Today also it was a very confusing day, but let's first start on the charts. Coming to the Nifty charts, if you remember yesterday what we had said, for a intermediate top formation, you need to have two things in place. First of all, there should be a red candle on the weekly time frame, which we have got. The second condition is the following candle should break the low of the previous red candle, which means this particular candle, which is the following candle, should break the low of this particular candle on closing basis. So far, as I said, there is still one more day to go, so we need to wait whether that thing happens or not. So we'll come to know by tomorrow. So there was this smart recovery from lower levels thanks to Mr. Powell, because of which Dow also closed on a good note of 400 points, and even Dow futures is again plus 77 points. But we saw that mega gap up only and only because Powell basically mentioned that he is going to see 3 rate cuts. Like US economy will definitely going to see 3 rate cuts. Now let's go on the daily time frame. Again, we have got a doji. Yesterday was a doji, which means indecision. We don't know whether buyers are winning or the sellers are winning. Now I'll just quickly tell you why why doji is considered as a confusion candle. See, if the sellers are winning, so what they will do, they will basically do this kind of a red candle, which means they will try to close at the lowest point of the day. And if the buyers are winning, they will try to close at the highest point of the day. All week is allowed. Like this is a clear winning day for a buyer. Here we can clearly say sellers are winning. Here we can clearly say sellers are winning. But if this is the kind of candle where we are getting the open and close almost at the same level with wide wicks on either side, it basically tells us that there is no clarity between the buyers and the sellers. So now let's go on the 15-minute time frame. That's what exactly happened. Where it opened, it exactly closed. Now yesterday, if you guys remember this, what I had mentioned, this 21,950 was the erstwhile resistance which it had already taken, and that's the reason I had taken this off. You can go and check my yesterday's video. This was the first resistance, and just before that only, as I said, you have to be very cautious. You have to book it before the level comes. So it actually, this particular level got rejected at somewhere around 2208 itself. It did all sort of a volatile move, but then it is basically we are clueless about who's winning. Now for tomorrow, we have this immediate support. The next support is here. We have this immediate resistance. If at all we happen to break this level, then the next level to look for is 22,200 to 22,275. It's a very larger range. One is the range. So tomorrow we are only going to focus on these ranges. That's it. Now let's discuss what will happen if we open flat. Now if we open flat, I'm expecting again market to more or less remain in a range. Why? Because see, there are resistances here and there are somewhere supports at this level, 21,800, 21,900, 21,950. So again market, I'm expecting market to remain range bound. If at all we open with the gap up, now the problem with the gap ups are, if at all, let's say if we open, see today the closing is 22,014. Let's say if we open with the gap up of somewhere around this level, 22,040 or 22,060, then market, if at all market remains sideways for a while and then tries to break out, again we have a resistance somewhere around this zone. The moment it touches here, again it will try to come down, try to fill this particular gap, and then again move up, and then it might remain volatile. So for tomorrow, I'm expecting again more or less triangle or straddle to play out. Spikes will remain, because see, this is one green candle which will spike up the calls, and then this 4 back-to-back red candles, again puts will spike, again to some extent calls will spike. But today's expiry was not that of a issue. If at all we open gap down, somewhere around this range, I'm expecting market to take support somewhere around this region of 900 to 930. Then if you happen to spot some sort of a bullish reversal pattern here, then that will be a good entry to go long, at least for this level till 22,060 till 22,080. This was about Nifty. Now let's quickly go to Bank Nifty. Bank Nifty, as I mentioned, it is trading near weekly supports. Again, this 1, 1, 2, 4, 5, and this one is the 6th day of doji. Again, doji indecision on the 15 minutes. Let's see. Simple R support resistance panda. This was the resistance. So as I yesterday mentioned also, that this one is a very old resistance,
and the moment we broke above this level, like it opened gap up itself, it went all the way up and got rejected from somewhere this round number of 47,000. In fact, I was expecting market to at least touch this level of 47,200, but it didn't move to that extent, and it got rejected somewhere after touching 47. But it now, see, because this zone was the erstwhile resistance zone, now this will act as a support, and today, rightly so, it did take some support here. For tomorrow, if at all we break this particular level of 46,570, then we will try to fill this particular gap, and we might even come to 46,200 levels. However, if we open with the gap up, then the upside still remains. If we somehow manage to close above 47,000, then it would be really great for the upcoming week. We need to see what happens when it reaches this particular zone of 47,000. This time, does it break and move all the way to 47,000 or not? That remains to be for tomorrow. But if at all we break this 47,000, the next target is 47,200 for sure. So for tomorrow, if we open with the gap up, then I'll look for bullish trades. Then if at all we open with a gap down of somewhere around this zone, 46,600 and all, if it happen to take some support and take a reversal, then that's good. But if at all we break this level of 46,570, then the next area it would be trying to fill this particular gap. Again, not very clear direction that we have. We need some weekly closing, then only we'll be able to gauge some moves for the upcoming week. For tomorrow, the important levels that needs to be taken care of is 47,200, this one. Tomorrow we have Sensex expiry, so we will definitely discuss Sensex levels as well. Very simple for Sensex. The immediate support is this one, 7250 to 72,400, and this one being an immediate resistance of 73,050, and this one is the major resistance. So I am not expecting Sensex to, like, a wider range I would give would be this range. I'm not looking beyond this particular zone, roughly 72,000 to 73,400 or 500. Much is the range. And for those of you who think more buffer on the downside, so you can basically take this particular low, which was yesterday's low for Sensex. So you can actually play with the wider range of this particular zone. Expecting strangles to work. The strangles, definitely all kind of a move is there, it will be difficult to manage that particular strangle, especially when there will be a sharp down move, then immediately there will be a reversal, again there will be a sharp down move. It will be very difficult. So then you have to ensure that your quantity or the position sizing is rightly managed, so then you don't get whipsawed in this kind of a move. The problem is usually we are used to having the smaller dojis in place whenever this triangle or straddle works out. This is what is happening. We are getting this kind of a doji wherein the entire day's wick is so huge that it actually kills everyone. Like, it will hit your SLs on the both the sides, and then it will close exactly where it opened. So that's about it for tomorrow. I'll just quickly wrap it up for our Hindi audience. निफ्टी आज गैप अप से तो जरूर खुली, उसके बाद यहाँ पर ये हुआ कि मार्केट वापस वोलेटाइल हुई और बिल्कुल डोजी वाली क्लोजिंग दी, जहां पर ओपन हुई वहीं पर ही क्लोज कर दिया। अब हमारे लिए ये इमीडिएट सपोर्ट है 900 915 के आसपास। मान लीजिएगा कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हमें ये देखना बनता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर अगर जाती है, अगर ऊपर जाती है और ये आज की लेवल को क्रॉस करती है, फिर भी आपको ये लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज ये लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और मान लीजिएगा किसी कारण ये लेवल भी अगर हम पार कर जाते हैं इन केस ऑफ अ मोमेंटम, तब हमें ये लेवल पे तो डेफिनेटली सतर्क रहना है। यहाँ इसके ऊपर मैं ये हफ्ते में तो डेफिनेटली नहीं देख रही, ठीक है। मुझे तो यहाँ पर ही लग रहा है, बट जस्ट इन केस इफ वी हैपन टू क्रॉस दिस लेवल, अगर ये लेवल क्रॉस कर देते हैं तो ये लेवल पर नजर रखिएगा। अब मान लीजिएगा अगर निफ्टी नीचे आती है तो मैं यहाँ पर कोई भी बुलिश रिवर्सल पे लॉन्ग जाने प्रेफर करूंगी, बिकॉज ये अभी एक हाल ही में एक नया सपोर्ट बन चुका है। दिक्कत तो तभी आएगी अगर हमने ये लेवल को क्रॉस किया। अब मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर एक बात है, डेली में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी, आई लाइक स्किप दिस पार्ट फॉर आवर इंग्लिश ऑडियंस ऑल्सो। तो डेली में कैन यू सी दिस पर्टिकुलर लेवल
This is about 21,922 or 21,900. So market never closed below this particular level. Can you see this? We never ever closed. And then this happened. The very next day this happened, which was yesterday. And now if you see, we are back in the range. So on a higher time frame, what will happen? You will just see this as a long wick. I'll just show you on a higher time frame. तो ये हायर टाइम फ्रेम पे लंबी वीक बन जाती है. क्यों? क्योंकि ये बेसिकली सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन हो जाती है, क्योंकि मार्केट नीचे तो आई थी, बट आज का वो जो अपमूव है उस पर्टिकुलर इसको उसने रिजेक्ट कर दिया है. तो इसको हम फेक ब्रेकडाउन तभी बोल सकते थे अच्छे से जब यहाँ पर हमें अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती. आज फिर भी थोड़ी सी इनडिसीजन की क्लोजिंग है. हाँ, बट ये जरूर है कि ये जो लेवल है जिसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं होने दे रही थी, 2 दिन से हमें लगातार उसके नीचे की क्लोजिंग मिली, लेकिन आज वापस मार्केट वो रेंज के अंदर जाके घुस गई है. ये जो 21,900 के अंदर वाली रेंज है उसकी बात कर रही हूँ. तो अब हम ये समझते हैं कि कल यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 900 915 के आसपास हम थोड़ी सी बाइंग के लिए देखेंगे. अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो ऐसा नहीं कि मार्केट वहां पर आया तो हम आंख बंद करके बाय करेंगे. वहां पर अगर अब हमें कोई बुलिश रिवर्सल दिखेगा तब हम बाय करेंगे, और ऊपरी लेवल्स पे यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट भी बुक करने के लिए देखेंगे. ठीक है, ये हुई बात निफ्टी की. चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में ये जो कल हमने जो डिस्कस किया था, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस अब काफी ओल्ड हो चुकी है, तो ये कभी भी निकल सकता है. इसका इंपॉर्टेंस रेजिस्टेंस के हिसाब से बहुत कम हो चुकी है. तो आज उसने गैप से निकाल दिया है ये लेवल को, और यहीं पर ही वो पूरा दिन मतलब थोड़ा ऊपर गया और 47 से रिजेक्शन लिया, और फिर पूरा दिन यहीं पर ही उसने बिताया है. यहाँ पर भी डोजी कैंडल, और ये 6th डे इन अ रो जहाँ बैंक निफ्टी डोजी बना रहा है. देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ था डोजी का सिलसिला, फिर यहाँ पर आ गए हम और डोजी ही बन रहा है. तो अब हमारे लिए ये इमीडिएट सपोर्ट है. अब हमें दिक्कत कब आएगी? कल अगर मार्केट ने 46,570 अगर ब्रेक कर दिया, तब हम ये लेवल ये गैप फिलिंग एरिया की तक जा सकते हैं, या मैक्सिमम 46,200 तक जा सकते हैं. ऊपर की और हम लोग आज का अगर हाई को पार करते हैं जो कि 47,000 है, तो हम 47,200 तक डेफिनेटली जा सकते हैं. अब कल के लिए क्या करेंगे हम? अगर कल मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुलेगी तो हम थोड़ा अपसाइड के लिए प्ले करेंगे, और मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो मैं ये लेवल्स को डेफिनेटली देखना चाहूंगी कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है या यहाँ पर रेंज बना के इसको ब्रेक करता है. तो ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और रिमेंबर, कल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है बहुत इंडाइसेस में, क्योंकि कल हमें वीकली की क्लोजिंग मिलने वाली है, जो कि हमें बताएगी कि अगले हफ्ते हमें अपने आप को कहाँ पर अलाइन करना है. अब चलते हैं फटाफट सेंसेक्स के पास, बिकॉज कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है. अब सेंसेक्स में बड़ा सिंपल है, ये इमीडिएट सपोर्ट है 72,350 के आसपास. इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमारा 73,000 73,050 की, और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है. नीचे की और 72,000 एक अच्छी सपोर्ट है, और ये जो कल की लो थी 71,600 के आसपास, ये बहुत ही अच्छी सपोर्ट है. तो कल के लिए अगर आप लोगों को स्ट्रैंगल्स प्ले करना है तो आप ये रेंज में प्ले कर सकते हो 72,000 से 73,400 500 तक. और जिन लोगों को थोड़ा नीचे का डर लग रहा है तो आप ये एज अ लो और ये रेजिस्टेंस के हिसाब से फिर आप प्ले कर सकते हो. तो याद रखिएगा, सेंसेक्स में कैसे प्रीमियम्स डेफिनेटली अच्छे होते हैं, बट सेंसेक्स में स्पाइक्स भी उतनी ही होती है. तो आप क्वांटिटी उतनी ही लीजिएगा जितना आपको रिस्क मैनेज करने के लिए आता होगा. ये रही हमारी सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी की एनालिसिस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, और हम जल्द ही मिलेंगे हमारे वीकली एनालिसिस में और एजुकेशनल कंटेंट में. तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको आने वाले हफ्ते में क्या एजुकेशनल कंटेंट चाहिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.